Hello, students. Welcome back to our online class with Best English School and with me, your English teacher, Havisha Patel from Best English School. So, students, in the previous video, we have completed the chapter 4 Bipin's Bab Chaudhry's Lapse of Memory, right? So, in this video, we would like to start the chapter 4 poem, that is the last bargain. Okay, so bargain, do you know the meaning of bargain? Each and every person in their life have done the bargaining. So bargaining means, in Hindi we can say that it's mol bhav karna, right? Our mother, our father used to do every time when they go to market, right? So it is necessary that you all know that what is bargain means. So let's see this poem. What does it teaches us? Okay. So let's begin our chapter 4, the poem The Last Bargain. A bargain is an agreement. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it's worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? So, this were the introduction. You all know that whenever I make you read the poem, I always make you write a summary, right? So, in this chapter, we will definitely write the summary part also. So, firstly, we will read the whole poem and then we will do the summary part. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pounded and said, I will hire you with my money. He weighed his coin one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all a flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man. So, this were the poem written by Ravindranath Tagore. You all have heard the name, the Nobel Prize winner Ravindranath Tagore, and he is most popular by writing the poems and these type of events. So, this were the whole poem. You can see in the screen that working with the poem we have to do this one also. Okay, so we will definitely do this one. Now we will see the summary part. So firstly we will like to start from introduction. So introduction. The Last Bargain is a soulful poem written by famous Indian poet Rabindranath Tagore. In the poem, the speaker is telling about the worthlessness of worldly things, power, and beauty.
Note that every human on earth is trying to achieve these three things. So, in the introduction, first paragraph, the last bargain is a soulful. Means it is have been written by the famous Indian poet whose name is Ravindranath Tagore, and in the poem the speaker wanted to tell us about the worthlessness of worldly things. Means the most three things that would be necessary to the humans to achieve it, that is power, beauty, and the things they wanted to achieve, right? So these things, in the humans, all the humans on earth is trying to achieve these three things. So what is the three things? Things, power, and beauty, students. Okay, so this were the introduction. Next, for him, every material thing on earth is mortal and not everlasting. Different people come to him with different types of worldly things. However, the speaker rejects them one by one. Finally, he makes a bargain with nothingness, which symbolizes the free spirit. So the poet wanted to tell us that every material thing on earth is mortal and not everlasting. Means mortals है, मतलब कुछ भी जैसे का तैसा हमेशा नहीं रहेगा. So different people come to him, the person in the poem, and ask the things, types of worldly things. Then the speaker rejects them one by one. The speaker rejected them one by one. And finally, he makes a bargain with nothingness, which symbolizes the free spirit. Means they have bargained and they have symbolizes him the free spirit. Means now the person is totally free, students. The poem is divided into 4 parts or stanza with a different number of lines. We will discuss the poem line by line in order to go through the hidden meaning. Okay, students? Now it's the stanza 1. In the first stanza, the speaker says that one day, while he was walking on the stone paved road in the morning, the king came in his chariot with a sword in his hand. Seeing him, the speaker pleads the king to hire him. So, in the first stanza, the speaker says that one day, when he was walking on the stone, पेव्ड रोड, एकदम रोड था, मॉर्निंग की टाइम थी और वो स्टोन में चल रहा था. तो उसी टाइम एक किंग आए उसके चैरियोट में बैठ के, एंड ही टोल्ड दैट कि द किंग विल हायर हिम. एंड सीइंग हिम द स्पीकर प्लीड्स द किंग टू हायर हिम. तो स्पीकर बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे हायर कर लो कोई भी काम के लिए. Note that it is the morning time that symbolizes hope and courage. Hence, the poet seems to be hopeless. Stone paved road here means a difficult path. King in his chariot with a sword means a person with power. So what happened, that morning time it was, right? एंड मॉर्निंग टाइम सिम्बलाइजेज लाइक होप एंड करेज. मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो एक होप और करेज में शामिल होता है. तो द पोएट सीरियसली सीम्स टू बी होपफुल. पोएट बहुत ज़्यादा होपफुल थे. बट यहाँ पे जो स्टोन पेव्ड रोड बताया गया है वो उससे ये पता चलता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट पाथ में है, बहुत ख़राब, बहुत डिफ़िकल्ट पाथ में है. तो जो किंग थे जिनके पास स्वॉर्ड था, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, वो क्या डिफिनाइट करते हैं, मीन्स अ पर्सन विथ पावर, उनके पास पावर है, राइट. द स्पीकर प्लीड्स टू द किंग विच मीन्स दैट ही इज़ इन नीड ऑफ समथिंग बैडली. ही आस्क्स द किंग टू हायर हिम. हायर here means that the poet wants to get what the king has. सो द स्पीकर प्लीड्स मतलब उन्हें रिक्वेस्ट किया किंग को कि प्लीज़ आप मुझे हायर कर लो कोई भी काम के लिए, कुछ भी, एनीथिंग. बट यहाँ पे हायर का मतलब ये है कि पोएट वो चाहते थे जो किंग के पास है. तो किंग के पास क्या है स्टूडेंट्स? पावर. आई हैव टोल्ड यू दैट पावर.
So the person is wanted to have a power from the king, students. Now in the stanza 2. Now it is the daytime and every hot outside. The doors of the houses are closed. The speaker is wandering along the crooked lane. Crooked lane means bent or uneven road. Thus like the stone paved road of the stanza, this road is more difficult and full of troubles. So what happens, students, in the stanza 2? It is the daytime and very hot. बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे सबके घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं. सो द स्पीकर इज़ वंडरिंग अलोंग द क्रूक्ड लेन, और वो क्रूक्ड लेन में घूम रहे थे, टहल रहा था, मतलब जा रहा था. वो क्रूक्ड लेन क्या है? वो क्रूक्ड लेन बेंट और अनइवन रोड से, मतलब एकदम फ्लैट रोड नहीं है, अनइवन, कहीं पे खड्डा, कहीं पे रास्ते ख़राब है, लाइक दैट वन. जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट स्टैंजा में बात की थी स्टोन पेव्ड रोड का, सेम, बट वो एक डिफ़िकल्ट था. ये जो है crooked lane is more difficult than the stone paved road and full of troubles. इसमें सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ और डिफ़िकल्टीज़ ही है. ओके. Soon an old man comes out of his house along with a bag of gold, that is huge wealth. He pondered that is thought carefully, and finding that the speaker is in need of something, offers him money and says that he, the old man, will hire him with that. So एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक ओल्ड मैन अपने घर से बाहर निकले विथ अ बैग ऑफ गोल्ड. उसके हाथ में क्या था? पूरा का पूरा बैग भरा हुआ था गोल्ड से. दैट मीन्स कि बहुत सारा पैसा. तो ही पाउंडेड, मतलब वो बाहर निकले, उसने द स्पीकर ने सोचा कि ही कैन हेल्प हिम, राइट. So the speaker is in need of something, offers him money and says that he, the old man, will hire him with that. तो उसे ऐसा लगा कि वो पैसे लेकर निकला है तो क्या पता वो उसे हायर कर ले कुछ काम के लिए. एंड सेज दैट द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था वो उसे हायर कर ले कुछ काम के लिए, राइट. द ओल्ड मैन, in order to show how wealthy he starts counting his gold coins one by one. However, like the power of king, the wealth of old seems to be worthless, because it could not make the old man young again, nor it could make the climate cool. So what happened? The ओल्ड मैन ने क्या किया कि वो बाहर निकला एंड इन ऑर्डर टू शो हाउ वेल्दी, मतलब वो ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना पैसे वाला हूँ. तो उसके सामने वो अपने गोल्ड कॉइन्स काउंट करने लगा वन बाय वन. तो जैसे कि किंग के थ्रू हमें क्या पता चला था कि ही हैव अ पावर. सो एज वेल एज द ओल्ड पर्सन, द ओल्ड मैन, वी कैन सी दैट ही इज़ वेरी वेल्दी, उसके पास बहुत पैसा है. बट द पोएट सेड दैट ही इज़ दैट ऑल इज़ वर्थलेस, वो कुछ काम का नहीं है, वो पैसे कोई काम के नहीं है. बिकॉज द ओल्ड मैन कांट बी अ यंग मैन एंड ही कुडंट मेक द वेदर कूल ऑल्सो, द क्लाइमेट. तो वो ओल्ड मैन यंग मैन तो बन नहीं सकता, और ये जो क्लाइमेट है उसको भी ठंडा नहीं कर सकता. तो पैसे वर्थलेस है, दैट इज़ वर्थलेस, कोई काम के नहीं है. The speaker understands that wealth is not something which he needs, because, like the power, it does not remain in one hand forever. He wants something else and thus goes away. So the स्पीकर समझ गया कि वेल्थ के थ्रू उसे जो चाहिए वो वेल्थ नहीं है. ही डजंट नीड समथिंग विच ही नीड्स. वेल्थ, पैसा, वो चीज़ नहीं है, ना कि पावर. जैसे पावर भी उसको सही नहीं लगा, वैसा सेम टू सेम पैसा भी उसे मीनिंगलेस लगा. एंड इट डज़ नॉट रिमेन इन वन हैंड फॉर एवर, वो कभी भी एक ही जनों के हाथ में नहीं रहता है. दैट विल गोज़ अराउंड एंड अराउंड. एंड देन ही थॉट दैट दिस इज़ वर्थलेस एंड ही ट्राइज समथिंग एल्स एंड डज गो अवे. फिर वो वहाँ से चला गया. स्टैंजा 3. Now it is evening time and the garden hedge, fence or boundary, is a flower, blooming with flowers.
In other words, the garden is looking very beautiful and romantic. A fair maid, a beautiful lady, comes out and says that she wants to hire him. The speaker, with a smile, that is with her beauty. सो नाउ इट इज़ एन इवनिंग टाइम, अब शाम हो चुकी है और वो एक गार्डन हज मतलब गार्डन्स के जो बाउंड्रीज होते हैं जहाँ पे गार्डन होते हैं वहाँ से वो जा रहा था. तो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, ब्लोसम्स थे फ्लावर्स में. सो इन अदर वर्ड्स द गार्डन इज़ लुकिंग वेरी मच ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक. Beautiful and romantic. It's like a fairy tale, you can say. And at that particular time a beautiful lady comes out. उसी टाइम एक beautiful lady सामने उसके आती है and she told that she wants to hire him, and she told that she wants to hire him with a very beautiful smile, and that is, we can say that, with her beauty. So firstly we have talked about power, second is money, and third is now beauty. Then however, the speaker finds that, like the king's power and old man's wealth, her beauty is also not everlasting. Soon the smile of that beautiful lady is paled and melted with tears. That is gone, and she goes back along into the dark. Dark here symbolizes hopelessness, and the speaker don't not want hopelessness. So what happened? The beautiful lady have given a active smile to the person, but the speaker finds that, like the similar way, the king's power and the old man's wealth, this beauty, her beauty will also not everlasting. उसकी जो beauty है वो भी हमेशा everlasting, long lasting नहीं रहेगी. Soon the smile of that beautiful लेडी इज़ पेल्ड, मतलब वो जो ब्यूटीफुल लेडी थी उसकी स्माइल फिर चली गई एंड वो उसके आईज़ में से टीयर्स आने लगे. एंड दैट इज़ द ब्यूटीफुल लेडी गोज़ बैक अलॉन्ग इनटू द डार्क. वो जहाँ से आई थी वहाँ से चली गई. यहाँ पे डार्क सिम्बलाइजेस करता है होपलेसनेस. होपलेसनेस मतलब होप ही नहीं है कहीं से भी. बट द स्पीकर डजंट वांटेड टू बी होपलेसनेस. द स्पीकर होपलेसनेस नहीं होना चाहता था. He understands that a smile that made her look beautiful is fake and not everlasting. It has hidden sorrows of the lady. The day is over, but the speaker fails to make a bargain. However, he has patience and persistence. He doesn't give up. So what happened? He understands that a smile, the lady's smile is it's just fake. हर लुक ब्यूटीफुल इज़ फेक एंड नॉट विल बी एवर लास्टिंग. वो हमेशा की तरह वैसी की वैसी नहीं रहेंगी. तो इसके अंदर एक लेडी का हिडन सॉरो भी था, वो बहुत दुखी भी हो गई थी. बट उस दिन स्पीकर, द डे इज़ ओवर, वो पूरा का पूरा डे ख़त्म हो चुका था और स्पीकर फेल हो चुका था बार्गिन करने के लिए. कहीं पे भी उसने बार्गिन नहीं की थी, राइट. बट ही हैज़ पेशेंस, बट उसके पास पेशेंस और परसिस्टेंस, मतलब उसके पास धैर्य था. एंड ही डजंट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया था अभी तक. नाउ स्टैंजा 4. In the final stanza, the new day comes with new hope and courage for the speaker. He is at the seashore and sees the sun glittering, means shining, on the sand, and the sea waves breaking, that is striking, waywardly, that is in an unpredictable way. This vista presented by the speaker symbolizes his love and appreciation for nature. So in the stanza 4, students, the final and the last stanza, the new day comes. एक नया डे आया with new hope and courage for the speaker. He is at the seashore, वो जहाँ पे समुद्र होते हैं seashore के वहाँ पे है. और sun was shining, sun शाइनिंग राइजेस, उस टाइम सन राइज हो रहा था. और उस टाइम ही सॉ दैट द सैंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रेकिंग,
मतलब सन जब शाइन कर रहा है, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, राइट, व्हेन द सन राइजेस. So it feels the poet very happy, very satisfied. So in an unpredictable way, मतलब उसने सोचा नहीं था उस वे में, he feels very good. So this vista presented by the speaker symbolizes his love and appreciation for nature. मतलब ये चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर है उसे नेचर से बहुत प्यार है. It symbolizes that his love and एप्रिसिएशन फॉर नेचर, मतलब उसे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और लगाव है. Soon he finds a child sitting on the seesaw and playing with shells. This is a symbolic image as the child has no desire for power or wealth or beauty. He is free of all these things which make the man a servant. So what happened? Soon the speaker find a child sitting on the seesaw. Seesaw समुद्र के किनारे, वहाँ पे वो एक चाइल्ड बैठा हुआ था एंड वो अपने शेल्स के साथ खेल रहा था. सो इससे ये पता चलता है स्पीकर को कि ये जो चाइल्ड है, ही डजंट हैव नो डिज़ायर ऑफ फॉर पावर, वेल्थ और ब्यूटी. उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पावर, वेल्थ और ब्यूटी के साथ, ब्यूटी के रिलेटेड. And he is free for all of these desires, and he is which makes the man a servant. ये तीन ही डिज़ायर ऐसी है जिससे मेंस सर्वेंट बन जाते हैं, ये तीनों चीज़ों के, राइट. सो द चाइल्ड इज़ फ्री ऑफ ऑल these थिंग्स which make the man as a servant, right. The child raises his head and sees the speaker. It looks to the speaker that the child knows him. Seeing the speaker in a quest search for something, the child offers to hire him with nothing. Nothing is a profound symbol. It means freedom, liberty, independence, and free from desire. सो द चाइल्ड रेसेस, उसने चाइल्ड ने अपने हेड उठाया और स्पीकर को देखा, एंड इट लुक्स लाइक द स्पीकर दैट द चाइल्ड नोज हिम. स्पीकर को ऐसा लगा कि वो चाइल्ड उसे जानता है. सो द सीइंग द स्पीकर इन अ क्वेस्ट फॉर समथिंग, सर्च, क्वेस्ट मीन्स सर्च. सो फॉर समथिंग द चाइल्ड ऑफर्स हिम, उसे ऐसा लगा कि उसे कुछ ऑफ़र करना चाहिए. सो द चाइल्ड ऑफर्स हिम टू हायर हिम विथ नथिंग, मतलब उसे वो हायर करेगा बट उसे कुछ भी नहीं देगा. नथिंग सिम्बलाइजेस प्रोफाउंड. इट मीन्स यहाँ पे जो नथिंग का सिंबल दिया गया है हायर करने में, उसका मतलब ये है कि फ्रीडम, फर्स्ट इज़ फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस एंड फ्री फ्रॉम डिज़ायर. ये जो तीन डिज़ायर है, पावर, वेल्थ एंड ब्यूटी, द स्पीकर वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम दीज थ्री डिज़ायर, and the child is given him that desire broken out because he wanted to hire him with nothing. He will not provide the speaker, the child will not provide the speaker anything. So then the speaker understands that this is what he was longing for since long. He accepts the child's offer, and from thenceforward, from that day, the speaker finds freedom in the child's play and thus becomes a free man. This was the ultimate destination of the speaker. So what happened? The speaker understand it about these things because वो बहुत टाइम से ये सब चीज़ें सोच रहा था, right? But he accept the child's offer. उसने एक्सेप्ट किया चाइल्ड का ऑफ़र उसी टाइम फ्रॉम दैट डे, एंड देन द स्पीकर फाइंड्स फ्रीडम. फिर स्पीकर को क्या मिला लास्ट में? उसे फ्रीडम मिला, जो बच्चा खेल रहा था, एंड उससे वो एक फ्री मैन बन गया. एंड दिस वॉज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द स्पीकर. ये उसका फाइनल और अल्टीमेट डेस्टिनेशन था स्पीकर का, स्टूडेंट्स. ओके, so this were the poem The Last Bargain with summary, students.
So I hope that you understand all the lines and all the descriptions of this poem, because this is very deep thought about this poem and very interesting also. The last bargain. And I hope that you like this video, and if you have liked my video, so you should have to do three things, that is like, share and subscribe my channel Best English School Students. Okay, so till there I will see you in the next video with upcoming new topic and new chapter. Till there, bye bye and have a nice day, students.